beautiful Aeon essay. Beautiful Aeon essay. I would say one of the best Aeon essays which you really enjoy reading is one of those. काफ़ी Aeon essays इतने प्यारे नहीं होते हैं, but this is one of the Aeon essays when एक वो tipping point आता है when students fall in love with Aeon, and this is one of those. Trust me, it's a beautiful Aeon essay. मज़ा आता है और ऑथर ने अपनी खुद की स्टोरी बताई है. आज उसकी टोन भी देखेंगे ऑथर की और उसको समराइज भी करेंगे. ठीक है भाई, चलिए लेट्स बिगिन. द अडॉप्शन पैराडॉक्स. पैराडॉक्स बोले तो यार कुछ तो उल्टा है. कॉन्ट्रडिक्शन. लर्निंग नंबर 1 फ्रॉम दिस Aeon essay. पैराडॉक्स. ऑथर का टोन could be paradoxical. Contradiction. It could be we are all talking about India is being great, etc. But author is actually talking about GDP. India's GDP is also great, but what's happening on the ground level right now? Nearly 60% of the Indian population is earning less than $2 a day, which is scary. Jobs are not coming in the same fashion which used to happen before 2015 onwards, right? In fact, there are no jobs for the youngsters. Jobs are also getting affected because of recession, post-COVID, etc. Because there is a recession globally. Still, India is a superpower, of course, no doubt in that. But still, there's a lot to be done. So, author is paradoxical. Author is trying to contradict some established norms, which he's going to be establishing in the reading comprehension, and he's trying to contradict that. Number 1. तो ये tone याद कर लेना, कहीं पे लिख लेना, भाई, it's called as paradoxical. आ जाओ भाई, वापस आओ. Even happy families cannot avoid the reality. My reality that adoption is predicated. Predicated मतलब based on transacting the life of a child. कहता है बेटा बच्चे की लाइफ ना ट्रांजैक्शन होना है भाई यहाँ पे. आगे देखते हैं. ऑथर कौन है? Fiona Sampson is an award-winning British poet and writer. Her books include Limestone Country, The Two-Way Mirror, Life of Elizabeth Barrett Browning, 2022. फोटो किसकी है? Fiona की. Fiona is age 3 की है, and with her adoptive grandparents. Oh, nice. Author is the same Fiona who is standing in here. Beautiful reading comprehension. Let's begin. A child of 4 or 5 sits coloring at the low table. बच्चा 4-5 साल का बैठ के कलर कर रहा है भाई low table के अंदर. Memory can be tricky. Colon मतलब explanation. The image is dim, rather unstable. कहता है image बड़ी fady है. But I know that the child is me. That she's been caught showing off her by her grandmother who is looking after her. Where are the parents? I don't know. पता नहीं. उसको नहीं पता है. ये अपने आज के विचार दे रही है और साथ साथ में अपनी स्टोरी सुना रही है. एक ग्रैंड मदर उसका ख्याल रख रही है और लड़की बोलती है आई एम गोइंग टू शो माई मम्मी एंड डैडी सेज द लिटिल गर्ल अबाउट अ पिक्चर. जो वो पिक्चर ड्रॉ कर रही है, दे आर नॉट योर मम्मी एंड डैडी. या सेज द ओल्ड वुमन ऑन द सोफा विचिंगली समझ दिया. विच वाला वर्ड यूज किया उसने. यू हैव अ रियल मम्मी एंड डैडी समवेयर एल्स. ओ तेरी भाई. तो ये उसके ग्रैंड पेरेंट में से एक ना एक आंटी बोल रही है यहाँ से. The child, remember, doesn't show her face. Semicolon. She keeps on coloring. वो मुंह पर नहीं किया उसने, वो कलर कर रही है. But the words have magic powers. Real, somewhere else. उसके दिमाग के अंदर हिट हो गया bro. The single sentence sucks the reality out of everything around her. The red carpet, the blue formica tabletop, the buttoned upholstery. Upholstery सोफे के ऊपर जो आप डेकोरेशन के लिए सामान उमान रखते हो, गद्दा वद्दा रखते हो, चीज़ें रखते हो, कुशन रखते हो, on which a grandmother sits watching her. Beautiful Aeon essay. ये हमारी प्यारी बच्ची Fiona, who herself is an adoptive child. Question. Boys and girls, is the tone of the author narrative or reflective? Come on, you know this. Come on. Is the tone of the author reflective or narrative? Tone of the author is reflective or narrative? Come on, give it to me. Reflective or narrative? Brilliant. कई लोग narrative बोल रहे हैं, कई लोग reflective बोल रहे हैं. दोबारा बता रहा हूँ भाई. Narrative मतलब where author is trying to tell a story. Normally, in all the essays, most of the time, Aeon में, there's always a story about someone, story about people, but sometimes the author herself is a character in the story. When the author herself is the character in the story, then you always said it's the reflections of the past. Author is इंट्रोस्पेक्टिव, ऑथर इज रिफ्लेक्टिव. ऑथर खुद के बारे में स्टोरी बता रहा है. अगर हीरो खुद ऑथर है जो अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है, इट्स कॉल्ड एज रिफ्लेक्शंस और द टोन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव. हमने 2 टोन पढ़ ली Aeon पढ़ते पढ़ते. वन इज रिफ्लेक्टिव, अदर इज कॉल्ड एज नैरेटिव. आज रात को सोने के पहले ये वाला Aeon से पढ़ के सोएंगे. येस और नो. नियरली 3000 प्लस वर्ड्स. इट्स गोना बी एन अमेजिंग एसे एंड इट्स गोना बी ऑसम. येस और नो. जिनको अभी तक Aeon से प्यार नहीं हुआ है, प्यार पक्का आपको प्यार हो जाएगा. ठीक है, डन है. चलिए भाई. ओके, ग्रेट.